And today is going to be an interesting session, and because we have with us Faisal, and Faisal is is from a company that's well known to all of us. He brings to the table over 11 years of experience. And वो जो company जिसकी मैं बात कर रहा था, that company is FoodPanda. So I'm sure that a lot of you who is watching are familiar and use it on a day-to-day basis. As you guys all know that every week we do these lives so that you guys can also connect from industry experts and get deeper level insights into these topics regarding the use of technology, AI, and how these things are being integrated into marketing. So today's topic is going to be about the role of technology in enhancing customer experience. And I would start the discussion today by asking Faisal a very simple question. Faisal, how are you today? And how do you feel by coming on this live today? Okay, thank you for having me over. I think I'm very excited and I'm doing pretty good today. और अच्छा लग रहा है and so happy to be here. Yeah, and that's great. So Faisal, tell me and the audience के अपने background के बारे में थोड़ा सा, and how you are managing things over in FoodPanda. Great. Acha, this is an interesting day because actually I started my professional career exactly 13 years ago on 22nd of August. And that was my first job with Telenor in Pakistan. So I have an engineering background I did my bachelor's basically from NED in Karachi. I am born and bred Karachiite. Education भी यहीं पे, पैदाइश भी यहीं, family भी सब यहीं पर ही हुई है. तो कराची आई था इंजीनियरिंग की टेलीनॉर में कोई मैंने 6-6.5 साल काम किया है. फिर उसके बाद अपना MBA किया मैंने from IBA in Karachi, and once I was done with that, I wanted to try out something new. And I want to say thanks to FoodPanda. They were willing to take the bet on me, and I joined FoodPanda in 2019, at the very start of 2019, when FoodPanda was actually transitioning itself from a marketplace to a non-delivery model. And I was hired to basically develop the rider fleet across nationwide. Or in about 1 year time, we were able to build a nationwide monthly active rider fleet of between 15 to 20,000 active riders. So by December 2019, हम ये number achieve कर चुके थे. और that was, I think, the kind of scale that FoodPanda transformed itself in a 1 year time. I don't see any company doing that in the recent history. I mean, FoodPanda has been a great name, and Delivery Hero ki हमारे पास backing है, but FoodPanda PK itself has been a remarkable success story. Kudos to everyone involved, right? Not only from the operations team, which I was, a part of, but also other functions as well who collaborated. फिर operations में ही मैं मुख्तलिफ roles में मैं रहा हूँ, from rider supply to fleet management and on all of these. And then in the middle of 2021, an opportunity came up within the organization, and I took up the role to head the overall customer experience function, whereby I started to take care of customer support, customer experience. For a larger part of time, risk and fraud management was also part under me, and a greater deal of collaboration based on product management and UX on regarding our app with our regional and global teams. So this has been my scope of work and journey so far. So I bring a blend of engineering and tech and business, and मुख्तलिफ ऑप्स रोल में काम किया है. टेलीनॉर में भी जर्नी मुख्तलिफ ऑप्स रोल्स के अंदर रही है. So that's been my profile. So that's a great profile that you have. And since I've initially in my life, once I was introducing you, I said that you bring to the table 11 years of experience, and that is actually a lifetime of a person, right? So I just wanted to start our conversation by saying that in these 11 years, you have seen that a lot of 13. आज 13th anniversary है. Mashallah. So in these 13 years of your corporate experience and through different organizations, can you tell me a bit about how consumer attitudes have changed with regards to acceptance of digital technologies? यार, I think massively. There was a time, I think जब मैंने टेलीनॉर ज्वाइन किया था, तो मुझे कहा जाता था कि फोन को दूर रखो, इसकी रेस से कैंसर हो जाता है. That's just 10 years ago, not before that. To a time कि अब आप अपने
फ़ोन से और डिफरेंट ऐप्स के बगैर ज़िंदगी गुजार ही नहीं सकते. इट इज़ इम्पॉसिबल. आपने आज 2 दिन के लिए आप इंटरनेट बंद कर दें फॉर सिक्योरिटी रीजंस या स्लो हो जाए इंटरनेट, तो हमारी लाइफ जो है वो स्टैंड स्टिल पर आ जाती है. So this is exactly the example how our lives have transformed. I mean, when I started my career back in 2011, उस वक्त 2G होता था, वॉइस कॉल होती थी, और आई रिमेंबर कि उस टाइम के ऊपर SMS पैकेजेस आए थे 20-30 पैकेज रुपए 20-30 पैसे के, एंड इट वाज एन अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ डिजिटल साइड ऑफ द थिंग्स टू अ टाइम के अगर व्हाट्सएप ना चले जो कि फ्री है तो हमारी जिंदगियां मुश्किल हो जाती हैं. So I I think can. Pakistan has come a long, long way, and in the last 10 years, but on all, more so in the last 5 years, the transformation that has happened thanks to the overall focus that has come onto the tech and gig economy, उसने पाकिस्तान में multiple ना सिर्फ अर्निंग अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की हैं, पर हमारी ओवरऑल लाइफ को जो है वो ट्रांसफॉर्म किया है. Yeah. And that's a great insight that you just discussed, that as Pakistanis we have progressed in the acceptability of use of internet, from the example that you just quoted about the use of phone and linking it with cancer. So tell me about that. That once, in the initial time when FoodPanda was currently establishing its footprint here in Pakistan, what were some of the challenges that they had to face in educating? Because FoodPanda has also grown, and it has climbed that ladder of consumer acceptability. So what were the initial challenges that it had to face when it was in Pakistan? ओके, अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये है कि हमारी जो टारगेट ऑडियंस रही है वो नॉट बाय, आई मीन, बच्चे जो होते हैं या जेनजीज एंड मिलेनियल्स होते हैं, दे हैव हिस्टोरिकली more have more adaptability towards tech. So that has been the case with us as well, and as a result, उनकी हमारी acceptability with respect to how our apps function and this and that वो रही है. जो challenge, I won't say really challenge, but I would rather say कि कहीं कहीं फर्स्ट मूवर एडवांटेज होता है, कहीं कहीं फर्स्ट मूवर डिसएडवांटेज भी होता है आपको. सो जो हमें है वो ये है कि पीपल विल टेक टाइम टू अंडरस्टैंड हाउ द फूड टेक बिजनेस वर्क्स रियली. For an outsider it just looks like कि यार खाना है बस आ जाएगा कोई राइडर लेकर के, but actually it doesn't work like that. It's a very very meticulous operation that's at the back end that ensures that आपका खाना विद इन 30 मिनट, जो कि हम एवरेज टाइम टारगेट कर रहे होते हैं, उसके अंदर आपको खाना मिल जाए. सो वो अंडरस्टैंडिंग इनिशियली लोगों के लिए वो एक सरप्राइज था. आई मीन, इफ आई टेल यू दैट हम हर दिन के हिसाब से अपने डिफरेंट रेस्टोरेंट पार्टनर्स के प्रेप टाइम्स को एडजस्ट कर रहे होते हैं. हम या ये राइडर ए अगर रेस्टोरेंट ए के करीब है तो दिस ही इज द बेस्ट राइडर टू डिलीवर दैट ऑर्डर रादर देन फैसल हु इज फार अवे फ्रॉम दैट रेस्टोरेंट. इस किस्म के एल्गोरिथम्स चल रहे होते हैं. ये चीजें आउटसाइडर जो लोग हैं उनके लिए इनिशियली समझना मुश्किल थी. But I think as the technology is advancing and more exposure is happening, people are traveling, a lot of people are going outside of Pakistan, तो मुख्तलिफ apps जब वो देख रहे हैं, और जब I'm sure जब वो फूड पैंडा पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बाहर किसी फूड डिलीवरी कंपनी से जब कंपेयर करते हैं, so they see that we are at par, but rather at many circumstances better than many international organizations as well. Understandable. So, you very rightly said that, in these days, the consumer habits are also something that you guys are taking into account, right? And when we talk about our habits versus our parents' habits, and the जो आजकल एक buzzword है for every organization कि यार हमने Gen Z के हिसाब से optimize करना है, right? So if you look at a lot of reports which dissects into the behavior, they talk about creating more personalized, interaction with the app. How FoodPanda is solving for that? Like, for example, if I'm a guy, how my interaction with FoodPanda would be different from that of a Gen Z? यार, so हमारे पास multiple features होते हैं. For example, we know that what is our audience, और हर audience को हमने कैसे target करना है. We show targeted deals to those audiences. ठीक है, हम आपकी ordering pattern की history की basis के ऊपर आपको recommendations दे रहे होते हैं. हमने अपनी customer की segmentations करके रखी हुई होती हैं based at zonal levels and at an overall company level. So उसके हिसाब से भी हम अपनी चीज़ों को फाइन ट्यून एंड प्रून करके कस्टमर्स को दिखा रहे होते हैं, because what we want is that we are able to generate value
to Yeah. that customer, and at the same time of course we are a going concern business entity, तो हम उससे कैसे अपने लिए business generate कर सकते हैं. I agree. So for example, हम ordering patterns में ये भी देख रहे होते हैं कि हमारे customers और more so हमारे Gen Zs किस तरह की ordering कर रहे हैं, Yeah. तो हम कैसी, क्या हम कोई bundling कर सकते हैं for our Q-commerce business around that. Yeah, in general also on the food side, कि what is our what do our customers like, and can we create some out of the box value for them, because that will generate value for the customer. तो order ज़्यादा करेंगे उससे हमें business आएगा. So ये चीज़ें जो हैं हमारी डिमांड जनरेशन और मार्केटिंग एंड कमर्शियल की टीम वेरी क्लोजली काम कर रही होती हैं इन चीज़ों के ऊपर टू जनरेट द बिजनेस. तो इसमें आपसे एक और वो है कि you have been here for a long time, you have seen different ups and downs with regards to how FoodPanda moved and progressed throughout the years. So in this time, in back in 2020, during after the post COVID, like immediately after, we saw that huge startup boom, and a हाँ. lot of companies started to come into this m-commerce, like for example Crave Mart, Grocers App, Airlift, all of these things. So how difficult, like how did Food Panda was one of the only companies that was able to survive that, while we see a lot of cases that went into, they had to liquidate and go out of market. Right. I think first of all, तो यार, I think let's take a moment and recognize all those entrepreneurial ventures that came in. We understand that वो successful नहीं हुए, Yeah. but I think the in entrepreneurial spirit and respect of entrepreneurial spirit, I have all my honor for all of those people Because who it does take a lot of courage to start that. करेक्ट. और वो जितने प्लेयर्स आते हैं, आई थिंक उससे मार्केट ही ग्रो करती है, और मार्केट जब ग्रो करती है तो इवेंचुअली कंज्यूमर्स का फायदा होता है और कंपनीज भी सीखती हैं. सो अब अच्छा, हमारे केस में यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई थिंक द बिगेस्ट थिंग हैज बीन दैट वी वर डूइंग थिंग्स राइट फ्रॉम डे वन. we were when I say we were doing things right from day one, is that we वो हमारे हमारा एक लीडरशिप कनेक्ट हुआ था, जो हमारे एक्स फाउंडर सीईओ थे. उन्होंने एक बात बोली थी कि यार, eventually every business is a धंधा, और धंधे को आप धंधे की तरह चलाएं, which Yeah. actually means that के you cannot sustainably grow if you grow at all costs. So that was something our management always knew that. Yeah. And so we were always एक रैशनल, हम ग्रो जरूर कर रहे थे, और अभी भी हम ग्रो कर रहे हैं, और हम मैसिवली ग्रो कर रहे हैं. वी आर वन ऑफ द emerging markets in the delivery hero group today as well. But what I want to say is कि हमने ना sustainably grow किया. हमने इन unsustainable measures नहीं लिए थे grow करने के लिए, और हम वो ही चीज पे फोकस कर रहे थे जिसमें हमें पता चले कि यार, यहाँ पर वैल्यू, कस्टमर को हम वैल्यू ऐड कर रहे हैं. कस्टमर एक्सपीरियंस पे पहले दिन से हमारा फोकस था. सिर्फ डीप डिस्काउंटेड डील्स के थ्रू हमने ग्रो नहीं किया, क्योंकि वो एक नॉन सस्टेनेबल वे ऑफ ग्रोथ है. बिकॉज व्हेन यू आर नॉट winning the hearts and minds of the customers, and you're Yeah. only incentivizing them, the moment that incentives are pulled off, they will definitely switch off to other platform. Or but in our case, we are doing better than maybe how the businesses generally were doing, जो tech businesses थे 2020 और 2021 के boom में. We are much better than that. So, and this is why, because हमने वो demand जो उस वक्त generate हुई थी, हमने उसको capitalize किया और उसको grow किया. This has been the success recipe for us. Yeah. And I'm glad that you used the same words that I actually wanted to phrase my question in the, for the next part. Is that you talked a lot about that you guys believe in doing the things right from the get-go, right? And then that is the recipe that you have. If I talk about the key core ingredients for this doing right things from the get-go, what are some of the key ingredients for it? Like, if you want to make sure that you do things right, what do you think does it entail, and what are some of the prerequisites for it? Yeah, it might sound like a cliche answer, but building the right team and developing the right culture is the root cause of doing everything right. Yeah, I Um, totally. and it's not, I mean, I said earlier कि शायद ये लगे कि मैं कोई बहुत bookish cliche answer दे रहा हूँ, but this is the reality. जब आप अच्छे लोग
who are aligned on a purpose, and our Yeah. purpose is putting meal on every table, and that's a very बड़ा motivating factor है, because we don't not only put meal on a customer's table, but जो restaurant partner या shop हमारे साथ business करते हैं, हम उसको भी business ला के दे रहे हैं, और जो rider हमारे साथ business कर रहा है एक तरह से, because they are also our partner and they are earning, we are putting a meal at their table as well. Yeah. So जब आप एक purpose driven organization होते हैं ना, so automatically you are willing to go outside of your comfort zone, and you don't even feel that. Yeah. I'll tell you, I'm not saying कि work life balance नहीं होना चाहिए, but in our initial days back in 2019 and 2020, मैं 10 साढ़े 10 बजे रात में तक काम कर रहा होता था, और Yeah. मुझे पता ही नहीं चलता था, Yeah. to an extent कि मेरी अम्मा मुझे कॉल करके बोलती थी कि बेटा आप घर आ जाओ, तो मैं कहता था अच्छा भी आ रहा हूँ, okay. I So mean, that is the point of working in a purpose driven. When once your work is connected to your purpose, and I mean, time just fly by. yeah, because देखें मैं आपको, और it's not just मैं तो उस I'm talking about that phase when I was actually directly acquiring riders and creating earning opportunities. That was a push for me, but it's across the board, everyone in the organization. Commercial side पे जो हम restaurants को onboard कर रहे हैं, उनके business को हम business generate करके दे रहे हैं. हमारी जो people and organization की team, we were growing at that time, so they were committed to hiring people, because they knew that the more quickly and the better resource they will provide it to the line managers, उस तरह से वो empower होंगे, और हम वो organization हम वो build करेंगे. So everyone across the board joined. और अच्छी बात एक तो ये, दूसरी बात ये कि हमारी organization में एक बहुत अच्छा culture ये है कि you can it's very open culture. Yeah. Our CEO is always accessible. Yeah. I think जितने हमारे CEO accessible हैं, and he's testing out things himself. I've never seen anyone as great as him, to be very honest. He's always telling me, Faisal, ये ठीक करना है, ये करना है, वो करना है. So that's the kind of the culture that we have. We're always moving ahead, always moving ahead. Yeah. And I really like that you put all your stakeholders into one of your missions, that it's not just putting meal on the table of just one at the end consumer, but it's also talking about putting the meal on the table of the riders, the restaurant owners, the people who facilitate this process. So Yeah. आपको how interestingly मैं आपको एक बात बताऊं, देखें there are about 200 customer support representatives. सिर्फ yeah, customer नहीं, हमारे multiple agents हैं riders को भी देखने के लिए, उनकी queries को, और हमारे partners को भी देखने के लिए. So ये काफी अच्छी हमारी जो third party हमारे पास जो customer support reps हैं, वो भी we are creating directly employment for them as well. So बहुत बड़ा ecosystem जो है ना, वो फूड पैंडा पाकिस्तान की इकोनॉमी में contribute कर रहे हैं. yeah, yeah, and I totally agree. As an avid user of FoodPanda, I can totally relate to that, because as I was discussing that with you, I just wanted to ask your insight that users are a very core center for FoodPanda, as you talked about, and not just the users; it's also the key stakeholders that are involved in this process. I just want to know that what are some of the values that FoodPanda inculcate inside the organization to make sure that all the stakeholder needs are being met in the way it should be. यार हमारा ना एक पूरा वैल्यू सिस्टम है, which every Yeah. organization, which every employee in the organization is being is sort of evaluated and valued and weighted. Yeah. So for example, one of our values is that decide fast, take risk and get it done, and prioritize and get it done. So इस तरह की हमारे multiple values हैं हमारी, और हम लोगों को constantly वो develop कर रहे होते हैं, उनके अंदर inculcate कर रहे होते हैं. Another value is, for example, start and end with the customer. So मेरे लिए customer, अगर मैं customer experience पे, तो वो end consumer है, but अगर कोई rider side पे, उसका customer उसका rider है. जो commercial side पर है, उसका customer actually वो जो restaurant partners हैं, जो QCOM side पर हैं, वो जो shops and marts and all there, वो जो owners हैं, और वो जो वहाँ की management है, वो उनके consumers, वो उनके customers हैं. So that is how we do that. और हमारी organization में ना, everyone is really pushing each other अपने consumer के interest को at the core of everything रखने के लिए, and everyone then collaborates and finds that what is right for the customer. And that's a brilliant, and I think that's a very key element for a successful culture that actually drives that purpose on which FoodPanda is built on. मुझे ये बताइएगा कि एक चीज हम हमेशा देखते हैं in the food delivery business, and especially when you're dealing with food, it's the delays that we have, right? So it is an actual pain point for the customer whenever the food is delayed.
from a customer experience standpoint, how do you guys manage that during the peak time hours? Or, for example, if I'm ordering something during 14th August, you know exactly that everybody would be home, everybody would be ordering. And so how you kind of manage that customer experience, and what's the checks in place to make sure that the customers are getting the right things at the right time? अच्छा हमारा ना एक पूरा इवेंट कैलेंडर बना हुआ है साल भर के लिए, Yeah. ठीक है? सो फॉर एग्जांपल हमें पता है कि हमारे कौन से दिन हैं जहाँ हमारी क्लियरली ऑर्गेनिकली डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी। Yeah. फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको बताऊँ जो एक और इमिनेंटली जिस दिन डिमांड बढ़ने वाली है वो अब आ रहा है रबीउल अव्वल का महीना, तो 12 रबीउल अव्वल के आसपास डिमांड बढ़ेगी। Yeah. देन जनरली फिर दिसंबर के अंदर देयर आर मल्टीपल इवेंट्स दैट विल हैपन बिकॉज एक ओवरऑल एक्सपैट्स की कमिंग होती है, इट्स अ फेस्टिव टाइम, तो हमें पता होता है। सो एक चीज तो ये है कि जो जिन दिनों का हमें पता है कि Yeah. really हमारी डिमांड बढ़ेगी ड्यू टू आइदर ऑर्गेनिकली और ड्यू टू एनी कैंपेन्स दैट वी हैव डिजाइन, उसकी तो हम बहुत मेटिकुलस प्लानिंग करते हैं बहुत अरसे पहले से। Yeah. सो 14th अगस्त ही बिकॉज इट वाज अ वेरी रीसेंट इवेंट, इसकी प्लानिंग हम इनिशिएट की ऑप्स टीम ने, हमने Yeah. कोलैबोरेट किया मल्टीपल टीम्स के साथ कि देखें दिस हैज बीन अ लर्निंग फॉर द लास्ट ईयर, व्हाट कैन वी डू दिस टाइम। कुछ टीम्स ने आपने बताया व्हाट दे हैव ऑलरेडी डन इट। सो हर दफा की एक प्री लर्निंग्स ऑलरेडी मौजूद होती हैं और फिर उसके बाद उन फर्दर लर्निंग से देख के नेक्स्ट टाइम के लिए हम इम्प्रूव करते हैं एंड देन वी डू अ पोस्ट एनालिसिस वर वी एबल टू क्या कहना चाहिए मीट दोज एक्सपेक्टेशंस या नहीं। इंटरेस्टिंगली मैं आपको बात बताऊं, बेसिकली जब पूरा पाकिस्तान जो है ना वो सेलिब्रेशन कर रहा होता है, पार्टी कर रहा होता है, फूड पैंडा में सारे लोग काम कर रहे होते हैं, नॉट बिकॉज कि कंपनी कहती है काम करे, बट एवरीवन इज वेरी एक्साइटेड कि अच्छा क्यों, हमें पता है इस दफा 14 अगस्त है, क्या ज्यादा ऑर्डर्स आएंगे, ईद है क्या इस दफा ज्यादा ऑर्डर्स आएंगे पिछली दफा के मुकाबले में, व्हाट हैज बीन द एक्सपीरियंस, क्या Yeah. हम ज्यादा ऑर्डर्स टाइम पे डिलीवर कर रहे हैं या कम ऑर्डर्स टाइम पे डिलीवर कर रहे हैं, व्हाट इज आवर हाउ इज आवर राइडर्स काउंट। सो ये सारी चीजें हम प्रीवियस लर्निंग से देख करके Yeah. इम्प्रूव कर रहे हैं और बिकॉज हमारे पास काफ़ी सोफिस्टिकेटेड ऑर्डर फोरकास्टिंग मेथड्स हैं, एट द सेम टाइम राइडर प्लानिंग के मेथड्स हैं, तो हम उनको भी इनकॉर्पोरेट करके हमें पता होता है कि सिचुएशन कहाँ अच्छी होगी, किस एरिया में हो सकता है हम स्ट्रगल करें फॉर सर्टेन रीजंस, तो हम उसके पहले से मेजर्स ले लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू राइडर प्लानिंग, राइडर इंसेंटिवाइजेशन, कस्टमर की डिमांड को कैसे मैनेज करना है, कहाँ डिमांड को कहाँ पर पुश करना है, कैसे कस्टमर डिमांड एंड राइडर सप्लाई के जो इक्विलिब्रियम है उसको करना है। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ये चीजें हम ऐसे मैनेज कर रहे होते हैं कि जितने भी ऑप्स के फंक्शंस हैं वो अपनी प्रॉपर प्लानिंग कर रहे होते हैं, कमर्शियल के फंक्शंस अपनी प्रॉपर प्लानिंग कर रहे होते हैं, एट द राइट टाइम इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव द राइट डील्स एज वेल फॉर द कंज्यूमर सो दैट दे हैव फील वैल्यू और उनको वैरायटी ऑफ चॉइसेस मिले, एंड सिमिलरली आवर मार्केटिंग टीम्स एज वेल। अच्छा मैं एक और चीज यहाँ पे बताऊं कि इट्स नॉट जस्ट दीज थ्री फंक्शंस आर डूइंग इट, जो हमारे और फंक्शन है लाइक फाइनेंस या हमारा पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन, वो भी इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहा था इस चीज के लिए। Okay. वो अपने अपने डोमेन्स में काम कर रहे होते हैं। फाइनेंस नीड्स टू इंश्योर कि एवरीथिंग इज फ्रॉम अ मॉनेटरी पर्सपेक्टिव कोई ब्लॉकर नहीं हो, दे स्टेप अप एंड दे इंश्योर फ्रॉम अ फोरकास्टिंग पर्सपेक्टिव टू द प्रॉफिटेबिलिटी पर्सपेक्टिव, वो उसको पूरा इंश्योर कर रहे होते हैं। सिमिलरली हमारी जो पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन की टीम है वो इवेंट्स के ऊपर एक नेसेसरी कल्चर बिल्ड कर रही होती है ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि एक हाई बिल्ड हो और लोगों को जो ना एक ज्यादा वो काम कर सकें, बिकॉज दैट्स वेयर the whole magic comes in there. Yeah. And you said that whenever the Pakistan is celebrating, the order price goes spiked up. So have you seen any such anomalies when Arshad Nadeem won the gold medal? यार एक्चुअली इट्स नॉट, बिल्कुल ऐसा होता है, बट इट्स नॉट Yeah. जस्ट अरशद नदीम। अभी जो है वो अगर यूएफओ हो रहा है या ईपीएल हो रहा है जिसके मैचेस जो हैं वो लेट नाइट हो रहे हैं, तो हमें पता होता है कि जो हमारे फुटबॉल फैनेटिक्स हैं वो लेट नाइट ऑर्डरिंग ज्यादा करना शुरू करेंगे, तो लेट नाइट डिमांड देन यूजुअल इंक्रीज हो जाएगी, तो हम उसको भी केटर कर रहे होते हैं। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स डेफिनेटली जब आपके पास या पाकिस्तान इंडिया का कोई मैच है, और ऑल्सो मैं आपको बात बताऊं बिकॉज फूड पैंडा इज वेरी actively involved in PSL. Yeah. हमारी एसोसिएशन भी है स्पोर्ट्स के साथ, स्पोर्ट्स इज वन ऑफ पाकिस्तान पैशन पॉइंट्स, तो हमने अपने आप को एसोसिएट किया है एज अ ब्रांड विद वन ऑफ पाकिस्तान पैशन पॉइंट्स। सो ऑलवेज व्हेन देयर इज अ स्पोर्टिंग इवेंट, जो भी पाकिस्तान में ज़्यादा थोड़ा पॉपुलर है, बेसबॉल पाकिस्तान में नहीं है तो उसका कुछ नहीं होता इतना ज़्यादा, लेकिन थिंग्स लाइक क्रिकेट एंड थिंग्स लाइक सॉकर
definitely we see increase in demand at that time. And that's a very a new news for me as well. When but everybody thinks that it's like a no brainer, but once you go देखिए, into the पाकिस्तानियों details, की एक्टिविटी क्या है? देखिए, पाकिस्तानियों की एक्टिविटी क्या है? सबसे बड़ी एक्टिविटी खाना खाना है। exactly. ठीक है। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली हम लोग बहुत ज्यादा कोई फिजिकल फिटनेस में नहीं है। हम लोग जो है ना वो अब अगर मैचेस होते हैं तो हम देखते हैं, और जब हम देखते हैं तो फिर हम खाना ऑर्डर करते हैं। हम बाहर भी जाते हैं अब फैमिली के साथ तो हम खाना ही खाते हैं, या हमारे घर कोई मेहमान आता है तो हम उसको खाने पे बुलाते हैं। तो जो खाना खाना जो है, फूड इज वन ऑफ द पाकिस्तान कोर एक्टिविटी, Yeah. and food panda is therefore the essential part of every household now. And I agree. Same. And I would like to point out that as an avid user of FoodPanda, I can vouch for this. और अब तो हम सिर्फ खाना नहीं देते ना, अब तो Yeah. हम इंटीग्रेट हो गए हैं पूरा लाइफस्टाइल में। क्यू कॉमर्स है हमारे पास, शॉप्स है हमारे पास इवन पैंडा गो है हमारे पास। तो अब तो सिर्फ रेस्टोरेंट फूड डिलीवरी बिजनेस के अंदर तो हम है नहीं हार्डकोर रेस्टोरेंट फूड डिलीवरी के, तो वी आर इंटीग्रेटेड इनटू द लाइफस्टाइल ऑफ एवरी पाकिस्तानी। Yep. And what are some of the other, trends that you are seeing that customers who are users of digital technologies to order food or incorporate payments and all these things? What are some of the other trends that you see that are on our horizon, which are being actively capitalized in the Western markets, but not so in the Pakistani markets? What do you see? यार आई थिंक एक तो आपने पेमेंट की बात की, सो ग्लोबली तो देयर आर लॉट ऑफ पेमेंट मेथड्स अवेलेबल। Yeah. एप्पल पे है, गूगल पे है। पाकिस्तान में जितने भी प्रोडोमिनेंट पेमेंट मेथड्स है, फूड पैंडा ने अपनी सारी ऐप में वो इंटीग्रेट किया हुआ है। यू कैन पे बाय कैश, यू कैन पे बाय योर क्रेडिट डेबिट कार्ड, जैस कैश, इजी पैसा। आप बिल्कुल उससे भी ज्यादा आप टॉप अप कर सकते हैं फूड पैंडा के अंदर अपनी ऐप में, सो दैट यू हैव दैट ईज दैट योर मनी इज विद इन फूड पैंडा एंड यू कैन यूज इट एट योर ओन कन्वीनियंस। So that's one thing that we are doing. Secondly, एक और चीज जो ग्लोबली हो रही है वो है जेन एआई की इंटीग्रेशन इनटू कस्टमर सपोर्ट। वो भी हम कर रहे हैं इन फूड पैंडा। So sometime later this year or early next year maybe we will be able to see that as well. So मुझे लगता है कि at least from a food panda PK perspective या food panda, क्योंकि हम we are the part of the delivery hero group, हम technologically किसी तरह lag नहीं कर रहे। We are at par whatever is happening in the food delivery business. Yeah. And one thing that I really like about FoodPanda is their mascot, the Pau Pau. Do you think that it is actually a contributor or it has facilitated the customer experience somehow? Can you share some of your insights on Yeah, that? I think what I've seen is कि the younger lot, the Gen Zs and even the Gen Alpha जो हैं, Yeah. वो they love Pau Pau, and Yeah. the overall look and feel of Pau Pau उसने हमें definitely brand love में increase करने में significantly contribute किया है, Okay. and I think going forward it will help us in developing that brand equity in the long run. Yeah. So, tell me about some of the things that you see in the delivery market industry. What are some of the changes that Gen AI is one thing that you pointed out, but what are some of the other technological advancement that Food Panda sees on the horizon in the Yeah, delivery? yeah, I think sky is the limit, to be very, very honest. Companies have done trials of doing deliveries via drones. Of course, there are some legal and regulations that may be at play और उसको further improve करने के लिए, but sky is the limit. और delivery पहले food delivery की होती थी, लेकिन अब तो आप whatever you can put into a box, you can deliver that. Similarly, इसके साथ साथ there are food delivery companies that are using methods apart from two wheelers to deliver bigger items of delivery की भी जो basically है ना वो variation होगी कि you want a very quick delivery within 30-40 minutes or you want a delivery within same day or within 2 days। तो वो अब सब चीजें ना backward integrate हो रही हैं, because you don't want everything urgently, but you do want things delivered at your homes, at your doorstep. So I feel that companies are going to do that. Even if you look at from a food panda perspective, we are introducing features gradually कि अगर आपको priority delivery चाहिए, that which is faster than our standard delivery. So if a priority delivery is ordered, let's say 25 minutes, maybe a standard delivery will take 30 minutes. So you'll have a difference about 5 to 7 minutes.
or more, and that is based on your need. So you can pay a little premium, very small premium of just 50 rupees, but you can have a faster delivery directly at your doorstep. So इस तरह से चीजें होंगी, but at the same time हम saver delivery भी दे रहे हैं Yeah. कि you can save on the delivery fee. That's also coming. But you might face a little, आपको 1 घंटे 1.5 घंटे में हो सकता है वो order deliver हो, because based on the need आपको फौरन नहीं चाहिए. So but you still want it at home. तो एक तो ये trend definitely आपको आता हुआ नजर आएगा. Similarly, two wheeler vehicles say maybe we can food delivery companies can move to 4 wheelers or 3 wheelers, more so in certain countries. Delivery do happen by 4 wheelers, cars के through होती है. एशिया में इतनी प्रोमिनेंट नहीं है ये चीज, बट कनाडा में है, सर्टेन यूरोप में तो बाइक से ज्यादा, आई मीन Yeah. जो बाइक है मैकेनिकल बाइक उससे ज्यादा होती है, Yeah. बाइसिकल यानी के. लेकिन देर आर कंट्रीज लाइक फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा विच आर वेरी स्पार्स लैंड्स जो हैं, वहाँ तो गाड़ी से भी डिलीवर होती है. तो मुझे नजर ये आ रहा है कि एटलीस्ट फ्रॉम प्योरली फ्रॉम एन ऑपरेशनल पर्सपेक्टिव, इंटीग्रेशन ऑफ द डिफरेंट मोड्स ऑफ कन्वेंस के थ्रू फूड डिलीवरी ज्यादा होगी. Yeah. Yeah. And another thing that I've seen that you actually impacts the overall customer experience of users here in Pakistan, especially over here in Lahore and other cities like, for example, Islamabad, where there's a lot of rainfall. Right, whenever that happens, the app stops taking orders because it actually puts the rider in risk of slipping or Correct. delaying order and all these things. Correct. What are some of the ways that Food Pandas is thinking to go around that? Because you talked about four-wheeler delivery, so that is the reason why I'm asking you that question. यार देखें, fundamentally ना, the problem is that Pakistan's infrastructure is not at par at a global level. We all understand that. Yeah. Globally जो है ना वो रेंज हमने स्टडी किया हमारी अदर मार्केट्स जो कि जहाँ ज्यादा हम पाकिस्तान से ज्यादा बारिशें होती हैं, फॉर एग्जांपल सिंगापुर, मलेशिया, वहाँ पर ड्यूरिंग द रेन्स डिलीवरी होती रहती है, बिकॉज द रोड्स एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर is stable enough to ensure that there are no खुदा ना खास्ता कोई casualty ना हो. Yeah. अब पाकिस्तान में ये है challenge and it will take only time for it to get better. And for this reason, when it's raining very heavily, we have no option but to basically stop doing deliveries. Yeah. और this is only and only to ensure कि हमारे पास जो है ना वो हमारे राइडर की सेफ्टी हो, because on the contrary, lot of people want to have pakoras when they exactly, that's exactly why हमारा passion point है, लेकिन ह्यूमन सेफ्टी कम्स फर्स्ट. हाउएवर हम इसके लिए जो इंश्योर करते हैं ना वो ये करते हैं कि जो आप बात करें वो ऑन दोज एरियाज जहाँ पर पाकिस्तान में भी हर एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंज नहीं है, देयर आर एरियाज व्हिच आर बेटर, वहाँ पर हम अपने राइडर्स को जो है वो रेन जैकेट्स देते हैं, उनको वो सारी चीज़ों से एम्पावर करते हैं कि जिसमें वो बारिश के अंदर सेफली डिलीवर वो कर सकते हैं, ताकि उनकी जो अर्निंग अपॉर्चुनिटी है वो मिस आउट ना हो, और कस्टमर का भी जो डिमांड है वो भी केटर हो जाए. बट हमारा फोकस हमेशा इस बात पे रहता है कि राइडर के पास वो रिक्वायर्ड जैकेट्स एंड रेन गियर एंड ऑल ऑफ वो सारी चीजें हों. सो एंड दोज हैव बीन डिजाइन्ड बाय अस इन सच अ वे that, for example, rider can keep their jacket inside, let's say सेल फोन का जैकेट के अंदर आप वो रख लें, लेकिन उससे पानी ना अंदर जाए. ये सारी चीजें हम कंसिडर करते हैं, कपड़े ना गीले हों, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट पे जो अगर उनके पास कोई सेल फोन है या कोई उनका जो एयरफोन्स वगैरह लगे हुए वो खराब ना हो. ये सारी चीजें ना कंसिडर करके जो हमारी प्रोक्योरमेंट एंड राइडर एक्सपीरियंस की टीम है वो कोलैबोरेट करके ये चीजें डिजाइन करती है. And very, very rightly pointed out that Pakistanis love their pakoras and whatnot, but human safety comes in first. I was talking about, and I was, as you were talking about, there were one point that I wanted to, ask your insights on is that a couple of times what we think is that a lot of challenges that are surrounding this business in improving the user experience, right? What do you like? If I were to give you like a list of top 3 challenges that FoodPanda is facing right now in terms of improving user experience, what would be those challenges? Okay, I think मैं चैलेंज तो नहीं बोलूंगा, बट मैं बोलूंगा कि अपॉर्चुनिटी है फॉर अस टू बिकम बेटर. आई थिंक जो हमारा ओवरऑल ecosystem है, it's alhamdulillah it's moving from cash to online payments, but there is a lot of still a mistrust in an overall usage of online payments.
Yeah. for a lot of reasons. So उधर एक अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली है फूड पैंडा के लिए कि हम कैसे अपने कंज्यूमर्स को ट्रांजिशन करा सकें कैश से टू मल्टीपल प्रीपेड मॉडल्स। इसीलिए हम हमारी पार्टनरशिप भी होती हैं मुख्तलिफ बैंक्स के साथ और पेमेंट गेटवेज के साथ, और हमारी पार्टनरशिप्स जो हमारी एम वॉलेट कंपनीज हैं लाइक इजी पैसा एंड जैज़ कैश उनके साथ भी होती हैं। तो एक चीज़ तो ये है। द सेकेंड थिंग इज के देखें, द फैक्ट इज दैट व्हाइल वी आर डेफिनेटली ग्रोइंग, बट there may be someone whose disposable income has reduced due to the overall inflation that has hit Pakistan. वो बिजनेस हर बिजनेस को उसका इम्पैक्ट हो रहा है। तो हम वी आर ग्रोइंग in terms of our financials we are perfectly fine, but maybe there was someone जिसकी disposable income शायद अब कम हो गई है because multiple reasons, inflation, rise in taxation and all, वो शायद अब वो एक मिस आउट हो रहा है। तो उसके लिए भी लेकिन हम काम करते रहते हैं कि हम कैसे वो डील्स लेकर के आएं या वो पार्टनरशिप्स हम लेकर के आएं, ताकि अगर कोई डिसएडवेंटाइज हो रहा है विद ऑल ऑफ द इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स, वो फूड पैंडा पे सिस्टम पे वो उसके लिए इंसेंटिव वो करने के लिए। तो एक तो ये चीज़ है। द थर्ड थिंग ऑल्सो इज के यार जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है ना वो डेफिनेटली हमें वो करता है, और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ मौसम भी। बारिशें तो एक एग्जांपल हैं, लेकिन एक अनदर एग्जांपल वो ये है कि पंजाब भर में स्मॉग इज अ बिग प्रॉब्लम व्हेन इन विंटर्स। उस वक्त भी हमें अपनी सर्विसेज को देखना पड़ता है कि हम कहाँ ऑपरेट कर सकते हैं और कब कहाँ ऑपरेट नहीं कर सकते। वो भी एक चैलेंज है जिसको हम नेविगेट करते हैं। अपॉर्चुनिटी भी है इसलिए कि अगर हम अपने राइडर्स को जो कि हम करते हैं फुल्ली एम्पावर करें, लेकिन वो भी एक हद तक कर सकते हैं ना। अगर विजिबिलिटी जीरो हो जाए तो फिर वी कैन नॉट आस्क देम टू ड्राइव, रादर वी वुड स्टॉप द ऑपरेशंस आवरसेल्व्स। सो ये आई थिंक ये दो तीन चैलेंजेस हैं जो कि रियल चैलेंजेस हैं पाकिस्तान के इकोसिस्टम के, और हम जो हैं वो उसको नेविगेट कर रहे हैं सिचुएशन को। Chale, that's a great insight that you have shared. अच्छा, अब मैं ना I will move towards the final phase of this live, but उसमें ना it's more interactive type, right? So अगर Sure. मैं आपसे ये कहूँ कि there's a startup owner who is going to launch an app which is again looking after providing a online service through an app regarding any service, online delivery for that matter. What advice would you give to them, considering your years of experience? यार आई थिंक जब आप अपना MVP बना रहे हैं ना, Yeah, तो प्लीज ensure that you are really really solving a customer problem. Please don't go after a fad. Okay, yeah, कि आजकल ये इन है तो मैं इसकी ऐप बना दूं। Please don't do that. Try to find a real problem and stay put, and your business will grow. What happens is कि हम लोग बहुत ज़्यादा हम इन्वेस्टर पिच डेक में, और हम स्लैंग में बोलते हैं there's शशकेबाजी में, एग्जैक्टली हम उस पे फोकस कर लेते हैं, लेकिन आर वी रियली ट्राइंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम एंड yeah, आर वी रियली कैपिटलाइजिंग द मार्केट करेक्टली? वो चीज़ जो है ना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो उस चीज़ पे फोकस करें, रियल वैल्यू एडिशन पे फोकस करें। बाकी चीज़ें जो कि कॉस्मेटिक्स के अंदर आती हैं, दे कैन कम लेटर। yeah. And what are your thoughts about for startup and entrepreneurs to keep themselves motivated during that journey? So what are your advice to stay? ओके, मैं सबको एक बात ये बोलता हूँ, बिकॉज आई एम अ फिटनेस एंथुजियास्ट। सो मैं यही सबको एक बात बोलता हूँ, जो लोग जिम जाते हैं आपको रिजल्ट एक दिन में कभी नहीं मिलता। Right. इट्स years ऑफ जर्नी Yeah, फॉर यू टू सी यू गेनिंग मसल और लूजिंग वेट। yeah, ठीक है? सो आप अगर क्विक सॉल्यूशंस की तरफ जाएंगे तो यू विल फील एग्जॉस्टेड, and yeah, you need to stay on the path on which you are. And startup is always about the journey, it's not yeah, a destination. yeah, अगर आप उस जर्नी के अंदर हैं और आप इंजॉय कर रहे हैं और आप वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, एंड वन स्टेप एट अ टाइम एंड गेटिंग बेटर 1% एवरी डे वाली फिलॉसफी को लेकर के चल रहे हैं, तो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर आप एक स्प्रिंट मारने में बिलीव करते हैं, तो मुझे लगता है कि आप बहुत जल्दी थक जाएंगे। yeah. And thank you so much, Faisal,
for these great insights. Because I literally have goosebumps right now by the things that you're Oh, saying. no. So, guys, this is the end of our live, and these are all the questions that I had to ask. So we'll just wait for a minute to see if we have any questions from the audience. And if not, then what we can do is that I will update your LinkedIn into our profile, and people can reach out to you directly. Meanwhile, we get questions here. आप मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा कि what are your hobbies? That एक तो आपने जिम फ्रीक तो बता ही दिया, फिटनेस फ्रीक तो आपने अपना बता दिया, but what are some of the other hobbies apart from work that you really like doing? यार couple of things. मैं of course Netflix देख लेता हूँ. Yeah, मैं ये कर लेता हूँ, और and I read when I get my time. कम मिलता है, to be very honest, but yeah, whenever I'm free, I try to read. Reading has been my go-to hobby ever since my school days, thanks to my parents. yeah, उन्होंने हैबिट इनकलकेट की है yeah, मेरे अंदर, अब वो आ गई है. बट टू बी ऑनेस्ट, अगर आप टाइम कम मिलता है, at least on the weekdays, going to the gym in the morning, coming to work, and then you have to spend time with your family, then you have to read something, watch TV, or watch Netflix and sleep. So that's what happens. But I think मैं हॉबी से ज़्यादा इस बात में बिलीव करता हूँ कि यार whatever I'm doing, क्या मैं क्वालिटी काम कर रहा हूँ, वो इम्पोर्टेंट है. तो वो मैं क्वालिटी टाइम अपनी फैमिली को दे रहा हूँ, मैं खुद अपने साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, मी टाइम एट टाइम्स. सो दैट्स मोर इम्पोर्टेंट. yeah. That's great. I think there are no questions. So with that, I would just say that thank you so much, Faisal, and thank you so much for all the people who have been, viewing and staying with us till the end of this live. It was a great time talking to you, and especially talking about the app that I am a big fan of. So with that, I would just end the live, and thank you so much again. Thank you, Umar, for inviting me, and I'm very happy to know that you are one of our loyal customers. Yeah, I will definitely connect with you offline to understand what we can do better to improve the overall things for our loyal consumers like you. yeah.